Assalamu alaikum, beta. In this video lecture, I will continue the lecture of precision medicine. Okay, I have delivered the most of the part of the lecture in the part one of the video, and now here is the remaining part with the gene therapy to be discussed at the very first. Gene therapy, beta, refers to you know in very easy explanation, it is the removal of the defective gene and replacing it with the normal desired gene. Okay, and gene therapy can be performed in certain ways. The very common, which has been in the run and has been used, is AAV gene delivery, that is adenovirus associated vector gene delivery. Okay, so, in this particular procedure, AAV gene therapy, how do we perform the gene therapy? How do we, you know, deliver the targeted gene into the human body? फर्ज करें ये एक ह्यूमन बॉडी है, सॉरी, फर्ज करें ये एक ह्यूमन बॉडी है, and we want this human body to produce a very specific protein that is very necessary for this human body. Okay, so for producing that protein, we need a gene to be here. Okay, and now how can we deliver the gene into the human body? This is what I have to tell you, beta. In this AAV gene therapy, okay, or delivery. What happens is, beta, if I take you to the picture to have better understanding, just a second, let me adjust it. Yeah, let's zoom into this and have a better understanding. Okay, beta, here you can see this is the adenovirus, okay? दिस इज द एडिनो वायरस, और एडिनो वायरस का जो अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल होता है वो हमने रिमूव कर दिया है, और इसके अंदर हमने थेराप्यूटिक डीएनए डाला है, यानी कि वो जेनेटिक मटेरियल जो हमें डिजायर्ड है, जो कि हमने ह्यूमन बॉडी में पहुंचाना है. सो दिस इज द एडिनो वायरस in which there is the therapeutic DNA, and the DNA are the gene of the desire. Okay, and then what do? We inject this virus into the human body. This is the outside of the body and this is the inside of the body. And what did we do? हमने inject कर दिया इस virus को, and inside the body you can see what's happening. What's happening? This is the human cell. This complete is the human cell. This is the cell membrane of the human cell. Okay, in the cell membrane you can see this virus that is containing the therapeutic DNA molecule. It is now invading inside the cell as an endosome. You can see it has now come into the cell in the form of endosome. Okay, then what happens, beta? That the endosome breaks down. Okay, you can see endosome is being broken down, and what happened, that the therapeutic DNA that was present inside this endosome, that therapeutic DNA is now released into the human cell nucleus. Okay, by what way? Virus actually binds with the cell nucleus and release the content, that is the therapeutic DNA. ये एंडोसोम रप्चर हुआ. एंडोसोम रप्चर होने के बाद बेटा ये जो वायरस था, ये वायरस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हुआ और डीएनए को अंदर रिलीज कर दिया. और ये जो डीएनए है, ये जब न्यूक्लियस के अंदर आ गया तो उसके बाद आने के बाद हमारे क्रोमोसोम्स के अंदर ये एडजस्ट नहीं होता, बल्कि न्यूक्लियस के अंदर ऐसे गोल पैटर्न में जाके जमा हो जाता है, और इस गोल पैटर्न को हम क्या कहते हैं? Circular episome. This is extra chromosomal DNA. The DNA which was released from the adenovirus into the nucleus is not incorporated into your chromosomes, but this is extra chromosomal. This is extra chromosomal and it is in the circular form, and is called circular episome, and it will now produce, obviously because this is the DNA and is now inside your nucleus, so it can perform, it can undergo the process of transcription and ultimately translation, and ultimately the protein formation. And this protein will surely be of very importance, and this will be the protein that you are desiring to have. Okay, now gene therapy beta can be the in vivo gene therapy or the ex vivo gene therapy. Let me explain you the both, in vivo and ex vivo gene therapy. In vivo gene therapy is when you beta deliver the gene into the human body directly. If let's suppose this is the human body, this is the arm, just for understanding purpose, this is the arm, and you inject the gene of interest into the human body directly.
This is the in vivo therapy. This is in vivo therapy. And what is ex vivo therapy? If let's suppose this is the human body and you take the cells, the cell out of it. This should be the bone marrow cell. If you take this bone marrow cell out and then you insert the gene of interest into this cell, and then what you do is beta, you take this cell back to the human body. This is the ex vivo gene therapy. Okay, so what is the difference between the in vivo and ex vivo gene therapy? In case of in vivo, what did you do? In case of in vivo, what did you do, beta? You directly inserted the gene of interest into the human body. And in case of ex vivo, what did you do? You first took the human cell out of the human body, then you inserted the gene of the interest, and then after inserting the gene of interest, you took this cell back to the human body, and human body will multiply this cell, and this cell will be obviously increased in your body, and you know you will be meeting with the demand that you had of desired protein. So let's here see the in vivo gene therapy. इन विवो जीन थेरापी में हम डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं बेटा, डायरेक्टली इंजेक्ट तो करते हैं, लेकिन जो आप जीन ऑफ इंटरेस्ट बेचते हो वो दो तरीके से बेच सकते हो इंजेक्शन के अंदर। एक तो ये हो सकता है कि वो नॉन वायरल डिलीवरी हो, यानी कि जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो आप इंजेक्ट करें लेकिन इंजेक्शन के अंदर वायरस नहीं हो, जैसे पीछे हमने एडिनो वायरस डिस्कस किया था। वायरस के थ्रू आप इंसर्ट ना करें बल्कि नॉन वायरल डिलीवरी, कोई भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं बेटा, वो आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी कर सकते हैं और कैरी करके आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर पहुंचा सकते हैं। जैसे कि डेंड्रिजोम्स हो गए और एलएनपीज हो गए, ये लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये नैनो पार्टिकल्स होते हैं, लिपिड नैनो पार्टिकल्स होते हैं ये, एंड दे कैन कैरी द जीन ऑफ योर इंटरेस्ट इनटू द ह्यूमन बॉडी इन द इंजेक्शन। ओके, और एक्स वीवो में अच्छा जरूरी नहीं है नॉन वायरल डिलीवरी, यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ द वायरस। सो इस इंजेक्शन के अंदर आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट लेना है। आप जीन ऑफ इंटरेस्ट आप वायरस के जरिए कैरी करवाएं या नॉन वायरल पार्टिकल्स के थ्रू कैरी करवाएं, जिस भी तरीके से कैरी करवाएं, आप डायरेक्टली इंजेक्ट करें। So this is the in vivo gene therapy. In vivo gene therapy, you are inserting the gene of interest directly into the human body, okay, either with the help of virus or not with the help of virus. Then comes the ex vivo gene therapy. What is this ex vivo gene therapy, beta? Look, there the you took the hematopoietic stem cells from the human body. Okay, you took hematopoietic stem cells out of the human body, and then what did you do? What did you do, beta? If let's suppose this is the hematopoietic stem cell which you took out, and these are the gene of interest which you want to be inserted into this, then here you can see what happened, beta. This was the hematopoietic stem cell that you took out from the human body, and this is the gene of interest which you added into these hematopoietic stem cells. Now the last step is to, beta, infuse these cells back into the human body. Infuse these cells back into the human body, and once these cells are infused back into the human body, your body will start producing lots of these cells, okay, which have the gene of interest, right? So what happened? You took your hematopoietic stem cells out of the human body, and this is the gene of interest you want to be here in your hematopoietic stem cell. Now you can see what happened, beta. This is the hematopoietic stem cell और इसके ऊपर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। और ये सेल, ये जो अब ये जो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल है विद जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये वापस आपकी बॉडी में उसकी इन्फ्यूजन हो गई। एफेरेसिस मतलब हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स को बाहर निकालना, और फिर जब इसके ऊपर जीन ऑफ इंटरेस्ट आ जाए तो इसको आप वापस बॉडी में अपनी इंसर्ट करें, तो दैट विल बी द इन्फ्यूजन। ओके, I hope you are clear with this, beta. This is the gene therapy. Okay, that can be the in vivo gene therapy and the ex vivo gene therapy. You understood the difference? You are directly injecting the gene of interest. Here, you are not directly injecting the gene of interest, but you are taking your body cells out of the body, and then you are adding the gene of interest, and then you are infusing the cells with the gene of interest back into the body. After this is another very important concept of beta. Just a second. Yeah, there is the CAR T cell therapy. CAR T cell therapy. Just focus on this, beta, and you will understand it better at the end of this. CAR T cell therapy. Firstly, beta, what did you do? That this is the human body. Obviously, this is the human body. Okay, and you took out of this human body a T cell. Okay, what did you do?
You took out of this human body a T cell. Remove blood from the patient to get cell. आपने यहाँ से ब्लड निकाला, उस ब्लड में से टी सेल अलग कर लिया. फिर आपने क्या किया कि यू इंसर्टेड द जीन फॉर कार. आपने क्या किया, फर्ज करें ये आपने टी सेल निकाला था, इस टी सेल के अंदर आपने एक जीन ऐड कर दिया. क्या ऐड कर दिया? जीन ऐड कर दिया. ओके. और जब ये जीन इस टी सेल के अंदर गया, तो ये जीन जब इस टी सेल के अंदर जाएगा तो इस टी सेल से एक प्रोटीन बनवाएगा. उस प्रोटीन का नाम है कार. ओके, यू कैन सी दिस इज अ टी सेल, दिस इज अ टी सेल, और इसकी सरफेस पे कुछ प्रोटीन्स मौजूद हैं. दीज आर द कार प्रोटीन्स, काइमेरिक रिसेप्टर, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर. तो फिर बेटा इसको मैं थोड़ा आसान कर दूं आपके लिए. देखें, ये है टी सेल जो आपने ह्यूमन बॉडी से निकाला. ओके. फिर आपने क्या किया, इसके अंदर एक जीन ऐड कर दिया. ये जीन का क्या काम है? इस सेल के अंदर जाने के बाद, इस सेल के अंदर जाने के बाद इस, ये देखें, ये आ गया, इस सेल के अंदर जीन आ गया. और ये जीन क्या कराएगा? इस आपके टी सेल की सरफेस पे कुछ प्रोटीन्स बनवाएगा. इन प्रोटीन्स का क्या नाम है? कार. दैट इज काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर. ओके, ये देखें, ये आ गया टी सेल आपका, इसकी सरफेस पे कार प्रोटीन्स आ गई. अब ये जो टी सेल है जिसकी सरफेस पे कार प्रोटीन्स आ गई हैं, इसको आप वापस, इसको पहले आप ग्रो कराएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अपनी डिश के अंदर. सो ग्रो मिलियंस ऑफ कार टी सेल्स, ऐसे टी सेल्स जिनके सरफेस पे कार है. अब आपके शायद जहन में यही सवाल चल रहा होगा बेटा कि हमने इन सेल्स को, ठीक है, टी सेल्स को बाहर निकाला, लेकिन क्या जरूरत पड़ गई थी कि इसकी सरफेस पे हमें कार लाना पड़ा, दैट इज काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर लाना पड़ा. तो बेटा देखें, अब तो हमने, ठीक है, सेल की सरफेस पे कार एंटीजन डाल दिए और इसको हमने बहुत ज्यादा मिलियंस में ग्रो भी करवा दिया, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सेल्स को वापस ह्यूमन बॉडी में इन्फ्यूज कर देंगे. तो नाउ यू आर इन्फ्यूजिंग द सेल्स इनटू द ह्यूमन बॉडी, which are not only the T cells, but these are the T cells with the CAR receptor on their surface. Okay, look, this is, let's suppose, inside of the human body, and you can see these are the T cells with the CAR on their surface. You know what is the function of this CAR? This CAR protein will recognize the cancer cells very quickly. This will recognize the cancer cells very quickly, and it will, after recognition, there will be killing of the cancer cells. एंड दिस इज हाउ यू गेट रिड ऑफ द कैंसर. अब आपको समझ आया बेटा कि हमें कार प्रोटीन क्यों ऐड करनी पड़ी थी, ताकि जब ह्यूमन बॉडी में जाए टी सेल्स तो वो कार प्रोटीन की वजह से कैंसर सेल्स को रिकॉग्नाइज करे और उनकी एपोप्टोसिस करवा दे, उनको किल करवा दे. ठीक है बेटा. सो इन शॉर्ट, you took the T cell out of the human body, you added a gene into that T cell, that gene helped that T cell to produce CAR on their surface, that is the chimeric antigen receptor, and here is the T cell with the CAR on their surface, and you multiplied this cell very much, and you inserted all those cells into the human body. Now your human body have this T cell with the CAR on their surface, and this CAR will help to recognize the cancer cells, and cancer cells will be died then, and this is how you treat most of the cancers beta. I hope you are clear with this. There are some other beta techniques as well, like CRISPR, PCR. These all are very important techniques in the genomics. We will better understand in the complete separate lecture of the laboratory techniques. Okay. So in the end of this lecture beta, one thing is that should be added here is, yeah, just a take home message, that why genomics now beta, why is it very much needed now, why now, why to study the genes. Okay. Because of beta high burden of rare Mendelian disorders, because the Mendelian disorders have been increased very much, so we need to study genomics so that we can diagnose the disease and have the better treatment as well. And the large population burden of consanguinity, consanguineous marriages जो हो रही हैं बेटा, I have complete lecture on consanguinity. Okay, so consanguinity की वजह से फर्स्ट कजन मैरिज, सेकंड कजन मैरिज, उसकी वजह से बड़ी सारी बच्चों में जो बीमारियां आ रही हैं, तो उनसे बचने के लिए भी जीनोमिक्स इज नाउ वेरी नेसेसरी. ठीक है. पॉपुलेशन बर्डन बढ़ गया है ना बेटा कंसेंजेनिटी का, और उससे उससे जो ट्रांसमिट होने वाली बीमारियां हैं. ठीक है. उसके अलावा और सारी हाई बर्डन ऑफ कॉमन मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर्स लाइक डायबिटीज, इस्कीमिक हार्ट डिजीज, और बहुत सारे कैंसर्स. दे ऑल आर मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर्स एंड दे आर रिलेटेड विद द certain genes.
So if you do not study those genes, how are you going to treat these conditions? So this is why beta genomics is very much necessary. Okay, and also with the help of genomics, you can have potential to prevent and relieve the symptoms of these disorders. Okay, which are having huge impact and the burden of diseases in the population we serve. So in short, genomics is very much necessary, beta. It was necessary early on, but now it is very much necessary. Why? Because of increased Mendelian disorders, consanguinity related disorders, multifactorial disorders का ज़्यादा होना, cancers का ज़्यादा होना, और बेटा इस genomics की मदद से we can study these diseases, the diagnosis of the diseases and the prevention and the treatment of the disease. That's all about beta this lecture. I hope you got the concepts. If you did beta, you can appreciate me by liking to the video, subscribing to the channel. Thank you so much beta. Class dismissed.